Hello, my lovelies. I hope you're doing well. And I'm back once again with yet another reading. And this time I would be taking up your questions. That's right. So, in this video, I would be answering your questions regarding Abishek and Manisha. That's right. बहुत सारे questions थे. They were like like around nearly 200 comments, and मैं आधी बेहोश हो गई, आधी गिरने वाली थी, मेरे बाल भी मेरे हाथ में आ गए स्ट्रेस में देख के कितने ज़्यादा questions थे. मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहा था कि कौन से लूँ कौन से नहीं, और काफ़ी सारे थोड़े से मुझे वो भी लग रहे थे, चाइल्डिश लग रहे थे, जो अभी मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ रेलेवेंस हैं. मुझे उनको साइड पे थोड़ा सा करना पड़ा. और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोग परेशान हो जाते हैं, उनको इशू बना लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करें बिकॉज अभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं. एवरीथिंग्स पॉजिटिव, एवरीथिंग्स गुड. जस्ट सेंड पॉजिटिविटी देयर वे. ओके, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. एंड okay, so let's get started with the questions. All right. I really because of course I cannot make the video too long, right? So and like I said, I need to take only questions which I feel के अभी relevant हैं, या ज़्यादा immature नहीं हैं. So let's see their opinion on Abisha fans. Okay, so quite a few of you wanted to know कि क्या opinion है Abisha fans के ऊपर. All right. All right, they really love you guys, okay, and because I feel it's just not a hashtag for them, okay, so it's actually true emotions. It's like celebrating their friendship and what they share. So that's why it's so special, because ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने स्पेशल हैं, तो ऑफ कोर्स फैंस जो इन दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं, सो वो लोग भी इनके लिए बहुत स्पेशल हैं. ओके, सो दे जस्ट वांट यू गाइस टू सॉर्ट ऑफ मेंटेन पॉजिटिविटी एंड कीप लविंग देम. ओके, एंड yes, they don't like toxic behavior, of course. No celebrity would like that. Whether it's a solo fan, whether it's a shipping fandom, Kagui fan, So no celebrity would like that. But they definitely feel a lot of love for you. But there are times when they feel trapped. It's like they want to interact. They want to be more interactive with the Bisha fans, but they feel they cannot due to certain reasons or complications. Okay, so थोड़ा सा एक लिमिट उनको करनी पड़ती है, वरना इनका बस चले ये लोग आप लोगों से बैठ के चैट करते रहें, आप ही लोगों को मे बी एड्रेस करते रहें. They have, because like I said, it's not just a hashtag for them. All right, so it's way beyond that, what they share. Okay, so moving on to the next question. So what the families think of their growing friendship and comfort they have with each other. Okay, so what do the families think of the growing friendship? So first, let's check Abhishek's family. ये मैं प्रीवियसली मेंशन कर चुकी हूँ वैसे अभिषेक की फैमिली का, सो मैं बहुत ब्रीफली बताऊँगी. मैंने पहले ही बोला था कि दे ऑल रियली लाइक मनीषा. देयर इज़ नो इशू, एंड whatever or whoever makes their son happy, they would be happy. So they are a very positive, fun-loving family. I feel that I don't feel they have an issue with Manisha at all. या कुछ भी ऐसा वो situation. Okay. Yeah, I mean the family really likes them together, and I feel that they're also waiting for them to work together. They want to see them together on screen because they feel बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. So अभिषेक की पूरी family को बहुत पसंद है, and they feel like they're so compatible.
कुछ सोलमेट एनर्जीज हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुल के ऑब्वियसली नहीं बोल सकते ये लोग. लेकिन of course they are concerned about the negative energy and the trolling. You know, they feel hanged and frustrated when it comes to that. With the energy of with the energy of the tower here, they feel very hanged. You know, कि जो कुछ भी जो haters करते हैं और चीज़ें complicate करने की कोशिश करते हैं, of course they don't like that. But otherwise, when it comes to the growing closeness or the bond, they appreciate it, they respect it, they love their interactions, they love seeing them together. And family में भी definitely interaction थोड़ा बहुत है, you know, like रहता है, you know, they're all connected, you know. So वो जो नहीं होता है घर वाली बात, एक वो वाली feeling आ रही है. Okay, और मनीषा की family का भी मैं देख लेती हूँ. So मनीषा की फैमिली का क्या है? Okay, so right, so Manisha's family's opinion about the growing friendship. Oh, Manisha's family really adores Abishek, you know. So, and I feel that especially two women from Manisha's family in particular, they're really fond of him. बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अभिषेक को. Celebration हुआ है, इनका reunion हुआ है, time spend किया है, okay. So, two female figures यहाँ पे, and they've been spending good moments together. New beginnings का आ रहा है definitely, and project का आ रहा है, so hopefully they should be working together soon. And I feel both of the families are very impatient. ये भी चाहते हैं कि साथ में इन लोगों को देखना, you know, not just the fans, okay. So yes, a lot of celebration. And Manisha's family also feels that he's a very nice, homely guy, and you know, अच्छे हैं, very nice he is, like in terms of his nature, and he's a good human being, okay. So sorry, just ignore my Hindi or Urdu at the, you know, at times, you know. That's why I prefer to speak in English, क्योंकि मुझे थोड़ा सा difficulty होती है express करने में अपने आप को. I mean, मैं बोल लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मसला हो जाता है कभी कभी. So as long as आप लोग समझ जाएं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, okay. So all right, so moving on to the next question. All right, so did they have a heart-to-heart conversation? Yes, I do feel they had a heart-to-heart conversation. ये मैंने previously भी बोला था कि yes, कि बहुत ही इनकी deep bonding हो रही है, बहुत ज़्यादा emotionally connected हैं. They're connected throughout, okay, so they have a deep connection, and yes, I do feel they had a heart-to-heart conversation. Okay, so what does Manisha think about Abhishek and Gia? Okay, so... and his behavior towards her. Okay, so what does Manisha think about Abhishek and Gia and his behavior towards her? So let's see. Okay. Okay, so Manisha knows that he's a very loving and loyal guy, okay, and she knows that he's been hurt in the past, and he has a huge history, past relationship ki, they've probably discussed it. So she's very protective about him. She doesn't want him to get hurt again, okay, and she feels there's nothing there, okay. So she feels there's nothing there, and Manisha is very emotional, very protective about Abhishek. बहुत ज़्यादा possessive भी हैं. So of course she's territorial, okay. She doesn't want him to go down that road because she feels that he will get hurt. So yes, and she knows कि पास में hurt हो चुके हैं. So she basically wants to protect Abhishek from the world. She just wants to sort of bubble wrap him and just sort of hide him from the world, and hide him, you know, away from any other girls. So एक वो वाले sentiments हैं इनके. All right, so moving on.
Okay, so Abhishek's thoughts about Manisha's flirting nature. Okay, so let's see. Abhishek का क्या opinion है उस चीज़ के बारे में? About a flirting nature. ओके सो इनका ट्रैवलिंग का आ रहा है सो हो सकता है अभिषेक ट्रैवल करने वाले हैं तो मनीषा करने वाली हैं दोनों करने वाले हैं साथ में सो सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन द एनर्जीज as well. So, okay, so he definitely feels very strongly about it. It definitely stresses him out, okay? It annoys him, it stresses him out, it makes him anxious, and he thinks about it a lot. And this is one of the major things जो इनको और ज़्यादा इनकी fears trigger होते हैं. इनको लगता है what if she breaks his heart? Even though he knows, he can feel it कि she won't. But अगर कोई bold step दूसरे डायरेक्शन में लेना भी चाहें इनकी तरफ like I'm talking about more than friendship. So this thing sort of like confuses him, even though he does realize कि मे बी जो शो करती थी पहले जिस लेवल पे जैसे बोल्ड बन के मे बी ही नोज के मजाक करती हैं like on a personal level she's not all about the flirting, okay? She does it in fun and humor, but he actually wanted to stop that, you know. So he feels strongly about it. एक थोड़ा सा इरिटेशन कोल्ड फीलिंग्स उस चीज़ को लेके होती है इनको. ही डजंट लाइक इट. सो yeah, he has a very strong opinion about it. Okay, so moving on to the next question. What is on Abhishek's mind as he never likes Manisha's posts? Okay, so I'm assuming आप Instagram post की बात कर रहे हैं. So okay, so what's on his mind? Why doesn't he like her posts? Even though I have said it previously as well, guys, that social media is not the real deal. It is not real life. बहुत कुछ होता है रियल लाइफ में, ओके? सोशल मीडिया से हट के जो आप लोगों को नहीं पता वो रियल लाइफ है. सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाते हैं जो करते हैं वो रियल लाइफ नहीं होती. एंड सोशल मीडिया डिटर्मिन नहीं कर सकता कि सिर्फ लाइक या लाइक नहीं करने से कि किसका बॉन्ड कितना डीप है, किसकी रिलेशनशिप कितनी जेन्युइन है, तो वो जो है डिटर्मिन नहीं कर सकते आप. But let's see what's his thought behind it, okay? Does he do it intentionally? Yeah, I see. All right, so okay, so they're connected most of the time, okay? They're connected आपस में. सोशल मीडिया को छोड़ के सो दे कनेक्टेड. सो ही फील्स के हर चीज़ फ्लॉन्ट करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं. देयर बॉन्ड इज़ डीपर देन दैट, ओके? सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ओके? एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सोशल मीडिया एंड ही डजंट नीड टू गिव एनी जस्टिफिकेशन, एनी क्लैरिफिकेशंस, एनी प्रूफ ऑफ देयर फ्रेंडशिप ही फील्स, ओके? सो हाउएवर जब उनको लगता है तो वो करते हैं लाइक, बट मे बी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इन योर फेस वाले मूवमेंट्स नहीं करते because he doesn't want any hatred or any negativity Manisha पे, okay? So protective होके भी नहीं करते. He wants to save her from the negativity, haters, because अगर कमेंट छोड़ देंगे तो मे बी हो सकता है वहाँ पे लोग शुरू हो जाते होंगे.
So he doesn't want that for her, and he also doesn't want कि कोई भी इनको like criticize करे कि maybe she's using Abhishek or maybe she's using him as a ladder to, you know, sort of he basically wants her to shine on her own. Okay, up the individual जो growth है, and I feel उस चीज़ पे focus कर रही थी throughout. So and possibly they have discussed it as well, you know. So they wanted to sort of reach that growth level, एक individual level पे पहले, before they can even sort of think of working together, you know. So I feel एक थोड़ा सा एक conscious एक वो भी था, एक थोड़ा सा फाइन चीज़ें डिले हुई, वो एक प्रोजेक्ट में didn't work out, पर जो मे बी डिलेज हुए हैं करने को तो ये लोग बहुत पहले मे बी शायद कर लेते किसी न किसी तरीके से, बट इनके ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ आई थिंक इनकी इंडिविजुअल ग्रोथ थी. So he basically wants her to shine. He doesn't want anyone to sort of point fingers at her. So because he takes that personally and he wants to protect her. So I mean, social media को आप दिमाग में इतना वो नहीं चढ़ाएं, you know. But अगर कुछ करना ही है तो social media पे please maintain positivity, you know. जो भी आपका आइडल हो, जिसको पसंद करते हैं, just maintain positivity without sort of writing negative comments about anyone, you know. Okay, so are they both interested? Interested in what? Wait. Are they both interested in taking the friendship forward? Okay, so let's see that. So are they interested in taking the friendship forward? Yes, for sure. Okay, I do feel that they do want to take things forward. They have that desire because feelings हैं वैसी इनकी. Okay, बहुत strong feelings हैं. So they want to do that, and like Abhishek also wants to make a bold move. Okay, he wants to sort of do that for her. But of course, it depends on the timing and इनकी fears जो हैं. So and एक वो fear वो भी है कि they don't want to mess up and lose out on each other. So उस चीज़ की वजह से रुक जाते हैं. थोड़ा अनसर्टनिटी है, एंड ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग्स इनके लिए आ रहा है जो स्टार्ट हो गई है अभी इस मंथ, एंड वंस दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आएगा, सो इट्स गोना ब्रेक द होल थिंग. वो जो नहीं होता है कि जो भी आप कह सकते हैं ना, इनको और हेल्प करेगा करेज लाने में, यू नो, आगे बढ़ने में, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता अब उस रास्ते पे निकल गए हैं ये लोग जहाँ दे नो दे हैव टू शो करेज. ओके, दे जस्ट कांट कीप हाइडिंग इन देयर शेल बिकॉज that would sort of give people the authority to sort of harass them regarding certain things and the bond, okay, or mistakes of the past. So I feel that yes, they do want to take things forward. एंड फुली एक दूसरे को शायद खुल के नहीं बता पाएँ, सर्टन लेवल पे बताया होगा, बिकॉज अभी एक टाइमिंग सही नहीं है चीज़ों की. अभी दे वांट टू टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. बहुत ज़्यादा फियर्स हैं अभिषेक के, तो देखें इतने फियर्स हैं कि अभी भी फियर में लाइक डूबे हुए हैं, अभी भी सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स हिम डाउन. ओके, सो बहुत मुश्किल से अपने आप को एक डार्क स्पेस से इन्हें निकाला है, यू नो, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, एंड ही इज स्कैर्ड टू फॉल इनटू दैट पिट अगेन. सो एक वो वाली चीज़ उनके साथ आ जाती है. बट डेफिनेटली एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हैं, एंड दे वुड सॉर्ट ऑफ प्रेफर समथिंग लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ें हुई. बट ये चीज़ ऑफ कोर्स खुल के एक दूसरे को नहीं बोली है, बट इनके दिल में, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बट दे वन थिंग्स फॉर श्योर, दे डोंट वांट टू लूज ईच अदर, एंड दे वांट टू टेक बेबी स्टेप्स. एंड सबसे पहले तो अभी जो इनका एम है, दे वांट टू वर्क टुगेदर. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप दे वांट टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. ऑलराइट, सो what does Manisha's sister Mishti think of Abhishek and Manisha's friendship? Okay, so all right, so let's see, what does Manisha's sister Mishti think of Manisha and Abhishek's friendship?
right. Okay, so she's very protective about Manisha. Okay, so she's looking out for her. She just wants Manisha to be very sure. And she feels that maybe the timing isn't right because Manisha has a lot to do professionally and she has a lot of responsibilities on her shoulders. Okay, and maybe there's one particular person in the family who's a bit strict. Now, that could be the father, या maybe she's worried कि father कैसे react करेंगे Manisha के, या थोड़ा सा चीज़ें उनको हैं. I feel she has fears, but she does hope कि maybe अगर कोई चीज़ work out हो तो serious level पे हो. She doesn't want her sister to get sort of hurt, you know. So थोड़ा सा एक वो है, and थोड़ा सा fears हैं, but overall, so she knows and she can see that Manisha बहुत खुश होती हैं अभिषेक के साथ, and they both are very genuine, okay, very genuine, true human beings that make each other happy, and she really likes him as a person. She does, okay. It's just that इनको timing का है, थोड़ी सी I feel practical है इन चीज़ों को लेके ये. जिसका आप लोग पूछ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल हैं और थोड़ा सा मे बी ब्लंट भी हैं, प्रैक्टिकल हैं, या द वे शी कन्वेज थिंग्स इजंट ऑल दैट ग्रेट, बट शी लाइक कोई ऐसी इल इंटेंशंस नहीं है. शी वांट्स द बेस्ट फॉर मनीषा, एंड शी बिलीव्स इन डेस्टिनी ऑफ कोर्स, कि एक वो वाली चीज़ है कि इफ इट्स मेंट टू बी तो हो जाएगा, दे विल फाइंड द वे टू ईच अदर. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन लेने नहीं वाली थी, बट मुझे क्योंकि काफ़ी फ़नी लग रहा था, फ़नी और क्यूट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा चले ले लेती हूँ. इसके लिए मुझे देखने की भी ज़रूरत वैसे नहीं है कोई. आई डोंट नीड टू यूज़ एनी टूल्स, बट इट वाज अ फ़नी क्वेश्चन. अभिषेक के लिए हाइट डिफरेंस मैटर करती है, एंड व्हाट, और कोई और ये भी पूछा था व्हाट डू दे थिंक अबाउट द हाइट डिफरेंस. सो ये चीज़ें लाइक जब आपकी ट्रू फीलिंग्स होती हैं, दीज थिंग्स डोंट रियली मैटर. ओके, सो दे डोंट, एंड आई फील देयर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के जो उस तरीके से शैलो नहीं है, इन्हें एक डीपर लेवल पे कनेक्ट किया है. ओके, सो इट गोज वे बियॉन्ड द लुक्स, यू नो, सो इट्स हाउ दे मेक ईच अदर फील. ओके, एंड द पॉजिटिविटी, द जेन्युइननेस जो इन लोगों को दिखती है एक दूसरे में, इट्स अबाउट दैट. ओके, सो फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए जल्दी से कि अभिषेक कैसे फील करते हैं हाइट डिफरेंस के बारे में. He basically feels that, you know, he finds it cute. Okay, he finds it cute, he likes it. He feels that उनको एक थोड़ी urge होती है height difference की वजह से, where he just wants to sort of protect her, you know, like होता है ना क्या, आप जैसे छोटे से बच्चे को गोद में उठा के या मे बी कहीं छुपा के, you just want to protect that person because he like because of his because of the height difference, and yeah, so he feels very protective, even more protective, because of the height difference, or maybe because she looks very young, you know. So उनको एक और ज़्यादा urge होती है to sort of protect her from everyone, you know, and एक वो वाली चीज़ है. And मनीषा कैसे feel करती हैं regarding the height difference? ओके, सो जो हाइट डिफरेंस है वो मनीषा को थोड़ा सा वो करता है एंक्शियस के, यू नो, मे बी हो सकता है उनको लगता है उनकी शॉर्ट कमिंग है या कोई डिफेक्ट है, या मे बी शी इज़ लैकिंग समवेयर, थोड़ा सा उनको फील कराता है, थोड़ा सा वो. लेकिन शी ट्राइज टू शो स्ट्रेंथ, यू नो, एंड कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि, यू नो, पीपल ऑब्वियसली लव देम टुगेदर, एंड शी नोज दैट, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, एंड शी इज़ गेटिंग यूज्ड टू द होल आइडिया कि जो इनकी मैसिव हाइट डिफरेंस है. एंड but थोड़ा सा वो फील करती हैं, she feels a bit nervous about it, you know, but I feel that Abhishek makes her feel very comfortable, तो ऐसा कुछ है नहीं, you know, but it definitely does, you know, like trigger her anxiety or maybe insecurities आप कह सकते हैं, you know, yeah. and ये जो चीज़ है ना इनकी हाइट की, मनीषा की, ये थोड़ा सा इनको
एक डिसअपॉइंटमेंट भी फील होती है, मे बी बिकॉज जिस इंडस्ट्री में है, या मे बी उनको लगता है या बोला गया है कि हाइट बहुत कम है, या आप यहाँ नहीं अच्छे लगोगे, इधर नहीं अच्छे दिखोगे, नहीं आप नहीं चल सकते, योर हाइट्स एक्सट्रीमली लेस, या कुछ इस टाइप की चीज़ें। सो वो उनके दिल पे डेफिनेटली लगी, इनको फील होता है थोड़ा सा। बट शी डजंट, ऐसा नहीं है कि शी फील्स के थिंग्स कांट वर्क और शी कांट हैव अ फ्रेंड जो जिसकी ऐसी हाइट डिफरेंस हो। बट इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल, ओके। बट शी इज़ वेरी क्यूरियस कि मे बी प्रोजेक्ट में ये लोग साथ में कैसे पुल ऑफ करेंगे, कैसे लगेंगे, या हाउ विल दे रोमांस इफ दे हैव टू सॉर्ट ऑफ रोमांस इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट, सो हाउ विल दे पुल दैट ऑफ बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। सो मनीषा ज़रूर सोचती हैं। Okay, so guys, I hope you enjoyed this video. So I would be wrapping up the video. If you enjoyed it, please do not forget to give it a thumbs up. And I'm sorry if I missed out on your questions. लेकिन बहुत सारे questions थे, so it was getting very difficult, you know. Like I could not take up all the questions. So बहुत ज़्यादा थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन थोड़े से मुझे इमेच्योर भी लग रहे थे, रेलिवेंट नहीं लग रहे थे, बिकॉज अभी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं। सो आई डोंट रियली वांट टू गेट इनटू द होल, बिकॉज काफ़ी लोगों ने बहुत ही पैरानोया में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो उनके फियर्स या नेगेटिव थिंकिंग में आप लोग चले जाते हैं। सो वो अभी कुछ बनता नहीं सेंस वो क्वेश्चन लेने का, बिकॉज आई फील एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, you know. So I'll be back once again. Till then, take good care of yourself. Bye for now.